So, hello students, welcome to Sambalpuri Pathshala. Now we will discuss about canonical form, triangular form theorem 6.4.2. So statement में given है if V is an n-dimensional vector space over F and if T belongs to AV has all its characteristic roots in F, then T satisfies polynomial of degree n over F. So इसका हम प्रूफ देख लेते हैं. सिंस टी हैज ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इन एफ, we can find a basis v1 v2 vn is a basis of v over f in which matrix t is triangular. ये आपको 6.4.1 में पढ़ाया हुआ हो, अगर डाउट होगा तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. सो दैट इज वी कैन फाइंड ए बेसिस v1 v2 डॉट 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 vn over f such that v1t equals to alpha 11 v1, v2t equals to alpha 21 v1 plus alpha 22 v2. Similarly vit equals to alpha i1 v1 alpha i2 v2 करके alpha ii vi तक एडिशन एंड फिर डॉट 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 vnt equals to alpha n1 v1 plus alpha n2 v2 plus डॉट डॉट alpha nn vn. ओके, ये हमने प्रूव किया था यहाँ तक. फिर इससे ही अब हम देखेंगे 6.4.2. So we know that in triangular form the characteristic roots are the entries in the main diagonal. Okay, let lambda 1, lambda 2, lambda n be the characteristic root of t. Then main diagonal बोला है means aii होगा. So then lambda I equals to aii for each I equals to 1 to n. So therefore we get v1t equals to lambda 1 v1. सो आपने आइगन और दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक रूट का थ्योरम में पढ़ा होगा वी टी इक्वल्स टू वी लामड़ा. यहाँ से लिखा है हमने वी वन टी इक्वल्स टू लामड़ा वन वी वन. सो वी टू टी इक्वल्स टू सिमिलरली अल्फा टू वन वी वन प्लस अल्फा टू टू वी टू. ओके, एंड वी आई टी इक्वल्स टू अल्फा आई वन वी वन अल्फा आई टू वी टू अल्फा आई माइनस वन वी वन वी आई माइनस वन और यहाँ तक आते आते लामड़ा आई वी आई. देखो यहाँ पर लास्ट में लामड़ा है तो इधर भी लामड़ा. और डॉट 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 सिमिलरली वी एन ऑफ टी इक्वल्स टू अल्फा एन वन वी वन प्लस अल्फा एन टू वी टू प्लस अल्फा एन आई एन माइनस वन. ओके, एन माइनस वन वी एन माइनस वन प्लस लामड़ा एन वी एन. दिस इम्प्लाई वी वन टी माइनस लामड़ा वन वी वन इक्वल्स टू जीरो. ये कहाँ से आया? इधर से. ओके, वी वन टी माइनस लामड़ा वन वी वन इक्वल्स टू जीरो. दैट इज वी वन ऑफ टी माइनस लामड़ा इक्वल्स टू जीरो. वी वन कॉमन लेंगे तो. सिमिलरली वी टू ऑफ टी माइनस लामड़ा टू इक्वल्स टू अल्फा टू वन वी वन. ये कैसे आया? बिकॉज वी वन जीरो आ गया यहाँ पर. सो सिर्फ बच गया अल्फा टू वन वी वन. ओके, और प्लस वी टू लामड़ा टू है ना यहाँ पर. सो इधर से देख लो वी टू टी और लामड़ा टू वी टू में से कॉमन आ गया वी टू एंड टी माइनस लामड़ा टू इक्वल्स टू अल्फा टू वन वी वन हो जाएगा सिंपली. सिमिलरली वी आई टी माइनस लामड़ा आई यहाँ पर भी हो जाएगा अल्फा आई वन वी वन प्लस अल्फा आई टू वी टू प्लस अल्फा आई माइनस वन वी आई माइनस वन. देन वी एन ऑफ टी माइनस लामड़ा एन इक्वल्स टू अल्फा एन वन वी वन अल्फा एन टू वी टू एंड ये अल्फा एन वन एन माइनस वन और वी एन माइनस वन. ओके, सिंस वी वन ऑफ टी माइनस लामड़ा इक्वल्स टू जीरो वी हैव वी टू ऑफ टी माइनस लामड़ा इक्वल्स टू अल्फा टू वी वन है. सो अगर हम लेफ्ट ऑन एंड राइट में अगर टी माइनस लामड़ा वन टी माइनस लामड़ा वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा. ओके, बिकॉज v1 of t minus lambda 1 equals to 0, so all the term equals to 0. So we know that t minus lambda 1 into t minus lambda 2
is equals to t minus lambda 2 into t minus lambda 1. This is your commutative property. And v2 into 1 minus lambda 2, v2 into t minus lambda 2 into t minus lambda 1 is equals to v2 into t minus lambda 1 into t minus lambda 2 is equals to 0. Continuing this procedure, we get I equals to 1 to n. Okay, then v1 of t minus lambda I into t minus lambda I minus 1 dot 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 t minus lambda 1 equals to 0. ओके, ये t माइनस लैम्बडा 1 इधर से आया, ये v2 अगर ऐसा है तो हम यहाँ से v1 v2 से लेकर vi तक हम ऐसे लिख सकते हैं। t vi में क्या होगा, t माइनस लैम्बडा आई इंटू टी माइनस लैम्बडा आई माइनस 1 डॉट 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 टी माइनस लैम्बडा 1 इक्वल्स टू 0। ये n टर्म में t माइनस लैम्बडा 1 t माइनस लैम्बडा 1 होगा, बिकॉज v इंटू टी माइनस लैम्बडा 1 ही 0 होता है। ओके, अदरवाइज 0 नहीं होगा। सो फॉर i इक्वल्स टू n, द मैट्रिक्स S इक्वल्स टू t माइनस लैम्बडा n into t minus lambda n minus 1 dot 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 t minus lambda 1। ये n के लिए भी satisfies v1s equals to v2s dot 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 vns equals to 0। Therefore s annihilates therefore s annihilates all the vectors in the basis of v and s, and so must annihilate elements of v, that is vs equals to 0, s equals to 0, because v not equals to 0। so let px equals to, हम पोलिनोमियल ले लेंगे x माइनस लैम्बडा 1 x माइनस लैम्बडा 2 डॉट 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 x माइनस लैम्बडा n बिलोंग्स टू f of x, be the polynomial of degree n। then p of t equals to 0 because px is minimal polynomial of t, so thus t satisfies polynomial of degree n over f, which completes the proof। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। For following more updates, like, share and subscribe to our channel।